तो ये है STYRA. शी इज़ अ मिडिल डिस्टेंस चैम्पियन एंड ऑल्सो बीच में जो है ये काफ़ी रेसेस जीती हुई है. जब छोटी थी यंग बर्ड, एज ए यंग बर्ड, एक आध रेस आई वो. देर से नहीं आती थी बट लाइक 25th नंबर, 300, 350, 400 किलो कबूतरों में उसका नंबर रहता था कि 25 के अंदर. मगर जैसा उसका 1 साल हुआ, 1 साल के बाद जब फिर वो बताना शुरू करी और हेल्थ उसकी जब इम्प्रूव हुई ये साल, सही चीज़ें उसको खाना और उसका फीडिंग का जो इशू था वो ख़त्म हुआ, तो उसकी स्पीड बताना शुरू करी. मैं उसका लेगमेंट बताता हूँ अभी. ये देखिए आप, WW, ये जो है अभी CU 2021 की है. और आज जो है जून की फर्स्ट है, जुलाई फर्स्ट है 2023 का. और ये बर्ड जो है इसका नंबर है 378. तो 2021 की है, तो पूरी ये 2 साल की हो गई. 2 साल में इसने अपना सही जो है परफॉर्मेंस बता दिया, यानी कि मिडिल डिस्टेंस में फर्स्ट आकर. एंड कैसी रहती, अक्सर लोग पूछते हैं, और ये भी है कि सबका अपना अपना मिथ है कि आँख कैसी होनी चाहिए. आपकी सर हटाइए बेटा, पीछे शैडो आ रहा है आपका सर. हाँ, तो कोई ऐसा ख़ास नहीं रहता मगर लोग बताते. अभी इसके मैं पर भी बताऊँ. देखिए विंग पैटर्न इसका विंग पैटर्न नो डाउट जो है थोड़ा अलग है दूसरे कबूतरों से. मैं देखा कि ये जो है प्राइमरी फेदर्स है और ये सेकेंडरी फेदर्स है, तो दोनों का डिस्टेंस ये जो है ज़्यादा फ़र्क नहीं है दोनों में. और जब उड़ते रहते इन्हें जब भी मालूम हो जाता कि इसका जो उड़ने का स्टाइल है और जो पर मारने का स्टाइल है वो दूसरे कबूतरों से अलग है. ये मैं महसूस करा. तो ये देखिए आप इसका विंग पैटर्न. तो खैर एनीवे, मैं आई साइन पे तो भरोसा नहीं करता. मैं कबूतर जो है रेस में डालकर पकड़कर मालूम करता हूँ मैं कि जब तक के कबूतर रेस में नहीं आता, जब तक कि मैं उसको जज नहीं करता. तो कबूतर सबसे पहले रेस में आना ज़रूरी है और उसके बाद जो है उसकी ब्रीडिंग के लिए या फिर परफॉर्मेंस के लिए सही है. तो ये है STYRA, मिडिल डिस्टेंस की फास्टेस्ट बर्ड. हमारे क्लब में 500, 550 कबूतरों में फर्स्ट आई और दूसरे रेसेस में भी कई बार 1 से लेकर 10 में आई कई बार ये साल. Here are some good records of STYRA, my best 10 of this year. She's a blue bar and she did her best. She's 2 years old now and this is her first race. So May 6th, 2023. It's a short race, and if you see the top here, this is Manny Azevedo. He put 16 birds and that's a bird number. Arrive at 10:30 2 seconds and the distance is 155 kilometers only. And look at the speed, 1348.99 almost. And if you see the same thing, mine came down here. That's me, 9th position golden eye. I put 15 birds and there's a STYRA's number. My best hen 378. This is her first race of this year. She came 10:16. If you see that, did 10:30 but she made it around 10:16, but due to distance I have 131 kilometers. That's the speed. And in the same race, this is my second bird right here, and that is Ababil 627. I have the same distance in 1243 speed. So this is my third race
and this is also a short race. And here 5th position GoldenEye Loft. I sent 11 birds, again the same hand game, 378, first in my loft, and it's 256 kilometers. My second bird is on 11th position, and that is Ababil. It's a male. He came around noon. So this is the second race. 4th race for STYRA. This is a middle distance race. Release at 6:30. That's me. I put 3 birds, and this is STYRA. 12:21 p.m. 410 kilometers air distance, and that's the speed. 5th race for STYRA. I put GoldenEye Loft. She came 3rd. 9 birds. That is STYRA 378. Short distance 184 air distance. 1274.975 speed.